Hi, good morning. Good morning. Morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning, Moiji. So we continue with our day 0 only today. So, but start thinking about the dreams. Start thinking about your dreams. What do you want to achieve in your life? क्या चाहिए? कौन सा dream relationship, dream job, or anything जो घर खरीदना है आपको किसी सिटी में, अपने ही सिटी में, किस एरिया पे, उनके बारे में और specifically you have to start thinking very specifically. What kind of a partner you want. So we all know Ashmin's daughter Annie is getting married, and like जब मैं उनका वो सुन रही थी कि उन्होंने अपने ड्रीम में लिखा हुआ था कि उनको पार्टनर चाहिए, और जो जो क्राइटेरियाज उन्होंने लिखे थे ना, मतलब बहुत स्पेसिफिकली लिखा था कि किस तरह का पार्टनर चाहिए, उसका हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, वो जल्दी सोने वाला होना चाहिए, उसको पार्टीज करना पसंद होना चाहिए क्योंकि वो खुद ही एक इवेंट मैनेजर है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे थे पार्टनर को लेके, एंड फाइनली शी गॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब तो व्हाट शी वाज सेइंग इज कि मुझे ये हैरानी नहीं है, मतलब मुझे इस बात की तो खुशी है ही दैट आई एम गेटिंग मैरिड, बट इस बात की मुझे बहुत ज्यादा, मतलब जो फेथ और जो ट्रस्ट होता है यूनिवर्स के ऊपर, दैट हाँ जादू होते हैं, एंड अगेन शी वाज सेइंग दिस दैट मैजिक्स डू हैपन, एंड इट इज सो मिस्टिकल कि उन्होंने जो जो क्वालिटीज लिखी थी वो सारी उस पर्सन में है। सो इस तरह से जादू होता है, मतलब यू कांट इवन इमेजिन दैट जैसे ही आप अपना डिजायर फ्लोट कर देते हो यूनिवर्स में, द यूनिवर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, लेकिन हम लोगों को अपने लो जोन में कोशिश करके नहीं रख के अपने आप को एलिवेट करना जरूरी है, तभी जाके ऑर्केस्ट्रेशन होती है यूनिवर्स के इनविजिबल रेल्म में हमारा ड्रीम डिजायर रियलाइज करने के लिए। देखो सपने तो सारे, अगर आपने 10 लिखे हैं ना, मैं स्टैम्प करके गारंटी करके दे सकती हूँ दे विल ऑल गेट फुलफिल्ड, है ना। सो आज से हम अपने ड्रीम का भी, बिकॉज अभी वो वाला पार्ट आने वाला है जिसमें हमको अपने ड्रीम्स के बारे में लिखना है बहुत स्पेसिफिकली। घर चाहिए तो कैसा घर होना चाहिए, कितना रूम्स होना चाहिए उसमें, हाउ मेनी, व्हाट काइंड ऑफ बालकनीज डू यू वांट एन ओपन किचन दैट कम्स इनटू द लिविंग रूम, और डू यू वांट अ सेपरेट किचन जिसमें दरवाजा डला हुआ होता है, रूम्स के बीच में आपको आर्च चाहिए, डाइनिंग रूम कैसे होना चाहिए, अगर आप बार के शौकीन हो तो यू वांट टू मेक अ बार इन द हाउस, वेयर डू यू वांट टू मेक दैट बार, किस तरह से आपको बाथरूम के कलर्स कैसे होने चाहिए, मे बी एक का पिंक एक का ब्लू, इस तरह से। सो वेरी स्पेसिफिकली इन्वेस्ट मोर इनटू थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट। हम इन्वेस्ट करते हैं थिंकिंग अबाउट व्हाट इज, हमें इन्वेस्ट करना होता है थिंकिंग मोर अबाउट व्हाट यू वांट इन द फ्यूचर, है ना, बिकॉज वट एवर यू होल्ड इन योर हेड वो रियलिटी बन जाता है। सो विल स्टडी फ्रॉम हियर। इज योर लाइफ मैजिकल? यस रितु खन्ना। Ma'am, I will read today. You told me yesterday. अच्छा रितु, इज इट ओके आप दूसरी वाली बुक पढ़ ले? वो मुझे पढ़नी है दीप्ति आज। Okay, okay. आई एम किडिंग, मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस लगा रही थी। नेवर एंडिंग सेशंस है। Ritu पढ़ सकते हैं मैम, if Ritu wants, please. रीना आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ अपनी आज प्रेजेंस लगा रही थी। रीना पढ़ ले। हाँ हाँ And I would request all the readers that when Deepti starts explaining, so please mute कर लीजिए। हाँ जी रीना। तो मैं पढ़ूं ये वाली बुक, सेकंड बुक रितु पढ़ेंगी? What is decided? आप पढ़िए प्लीज मैम, आप पढ़िए रीना मैम, आप प्लीज पढ़िए। Okay, is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships,
more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It is the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are talking, we are taking, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Most certainly, आई you थिंक मैं रीना यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है क्योंकि ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू से अभी तक सो इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपनी जिंदगी को इस बार देखो लुक एट योर लाइफ राइट नाउ you know what are the areas where you are not successful? Are you not successful in a relationship? Are you not successful at money? Are you not successful in travels? Maybe there are no very good travels to exotic places. Are you not, like, is something else, career not working out for you? Are you not happy from within? Okay, so मतलब कहीं पे कुछ या फिर किसी भी एरिया में जहाँ पे आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, is your health not okay? So हमको आज अपने आप को देखना है. We have to see in all our areas of our life that कहाँ पे हम super successful नहीं है. Okay, because universe is equal to super success in every field. तो हमने उन areas में complaints की हुई हैं बहुत ज्यादा. Because of the complaints, आगे की जिंदगी open up नहीं हो रही है. That's very, very clear. लेकिन we don't have to worry about it. It is just a matter of time. Very soon, when we have gratitude in those areas, तो हमारी by day and night हमारी success होती जाएगी उन areas में. Suppose you're not able to buy a house, आप देखना कितनी आराम से आपको घर मिलेगा, आपको बैंक लोन अगर चाहिए वो अप्रूव हो जाएगा, या आपका कोई और प्रॉपर्टी बिकनी है उसके पैसे से आपको दूसरा घर खरीदना है, वो बहुत आराम से और उसका इतना सरप्लस मनी आएगा और आप बहुत इजीली, और वो बच भी जाएगा एंड यूल बी एबल टू बाय अ हाउस. ठीक है. इसके अलावा आपको रिलेशनशिप्स में यू विल सी गोल्ड इन योर रिलेशनशिप. ओके, लेकिन इन सब के लिए एक कॉमन चीज पहले होती है, यू हैव टू गिव. फर्स्ट यू हैव टू गिव, देन यू विल गेट. गिव व्हाट? ग्रैटिट्यूड. आप पहले से ही ग्रैटिट्यूड दे दो फ्यूचर की चीजों के लिए भी. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल माय रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स इन माय लाइफ. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस दैट आई लिव इन. फिर आप देखना कि आपको किस तरह से आपको और प्रॉपर्टीज आती जाएंगी. If you want your career, your dream job or your business to escalate, आपको लगता है आपके business में बहुत growth and progress होनी चाहिए, आप बिल्कुल चरम सीमा of success पे पहुंच जाए, at the topmost successful point, then you have to keep telling that thank you that my business is expanding and my sales are getting better and better by day and night, इस तरह से. So यही है. तो is your life magical? मतलब हमको magical life बनानी है. अगर नहीं मैजिकल है तो हमको उसमें मैजिक लेके आना है, और मैजिक लेके आने का तरीका है आप पहले से इवन फ्यूचर के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, है ना. एफर्मेशंस क्या होता है? एफर्मेशंस फ्यूचर के लिए तो होता है that I'm getting fitter and fitter day by day. I'm so grateful that my body weight is 54 kgs. It's not 54 अगर right now, लेकिन आप बार बार अपने आप को ये यकीन दिलाते हो, बार बार उसके लिए पहले से ही थैंक यू कर देते हो, तो अपने आप वो आप देखोगे कि वो वाला रास्ता शुरू हो जाता है. कैसे शुरू हो जाता है? This is what magic is all about. This is because gratitude is very very magical. There is no doubt about it. So इसमें यही लिखा हुआ है कि अब आप आज रिव्यू करो अपनी जिंदगी को कि कौन से एरियाज है which are not doing well in your life. Money, health, happiness, career, home, relationships. If they are not doing well, that means they are full of complaints. हमको वो energy transform करनी है. ठीक है. और हम जो है हमारे पास, whatever we have right now, we have to be grateful for them. उनके लिए हमको शुक्राने में रहना है. ठीक है. सो इसमें लिखा हुआ है जो एरियाज आपके अबंडेंट एंड वंडरफुल है, दैट मीन्स आपने उनको बहुत ग्रेटिट्यूड दिया है. ठीक है. और आप देख रहे हो कि उन एरियाज में मैजिक हो रहे हैं. जो एरियाज आपके
थोड़ा टॉक्सिसिटी वाले हैं या थोड़े से कम अबंडेंट हैं, इसका मतलब है वहां पे बहुत लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है, यानी कि हम शुक्राने में नहीं है, हमने कंप्लेन भरी हुई है उसमें। ठीक है, सो सिंपल फैक्ट है कि जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हो तो आपको कोई चीज रिटर्न में नहीं आती है। दैट मीन्स आपको पहले देना पड़ता है, फिर आप रिसीव करते हो। इसलिए लिखा हुआ है कि जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हो, यू विल स्टॉप द फ्लो ऑफ बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप्स, मोर जॉय, मोर मनी एंड द एडवांसमेंट ऑफ योर जॉब, करियर और बिजनेस। और ये लॉ है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इट्स नॉट दैट I don't believe in it, I don't believe in magic, so don't believe, but this is how it's working, because like attracts like, ये scientific formula होता है। ठीक है, so जो इसमें पढ़ा है, the law of attraction says that like attracts like। इतने सारे लोगों की हमने जिंदगी बदलती हुई देखी है आपने इन सेशंस में। ठीक है, इन्हीं सेशंस में देखा है हमने कैसे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। मतलब हेल्थ ऐसी हो गई है जैसे उन्होंने सोचा भी नहीं था। मतलब लिटरली सब लोग अपनी उम्र से 10-10 साल छोटे लग रहे हैं, 20 साल छोटे लग रहे हैं। हाउ डज इट हैपन? So many people have lost body weight. I was very odd and inspired by Darshana's experience जब उन्होंने बताया था कि उनको फैट वेट कम करना था और लीन वेट बढ़ाना था, और उन्होंने रोज अपने आप को बोला that I'm reducing my fat weight and I'm increasing my muscle weight, you know। और एक महीने में इतना सारा हो गया। मतलब जो हमारे सेल्फ टॉक होता है, माइंड टॉक होता है, जब हम खाली होते हैं उस वक्त जब हम सोचते हैं, वो बहुत जल्दी हम आउट रियलिटी में देखते हैं, है ना। सो इतना इजी था एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब नॉर्मली 3.5 किलो लीन वेट मसल बढ़ाना, मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है अगर हम साइंस के हिसाब से देखें। और ये तो मेरा फील्ड है, आई नो हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो फ्रीक्वेंसी आपकी है, आपकी ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है ना, जिस चीज में आपने ग्रेटिट्यूड की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डाली है, you will attract that more and more into your life, you know। thank you for my perfect weight, you will see अब कैसे वो perfect हो सकता है। आपको कोई वर्कआउट मिल जाए, हो सकता है सडनली आपको इंस्पिरेशन आए that I am following this diet, हो सकता है कुछ और हो जाए, पता नहीं वो। ठीक है, हाउ में हमको जाना ही नहीं है ना। हाउ में मतलब जाना है, यू मेडलिंग विद द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, यू मेडलिंग विद दैट फोर्स फॉर द गॉड, जो भी हमारे भगवान हैं, हम उनको इंटरफियर करें, उनका काम उनको चुपचाप करने दो। दे आर वे बेटर देन अस, दे आर इन्फिनिट इंटेलिजेंस। हम अपना काम करेंगे, पॉजिटिव जोन में रहेंगे, और अपने आप की जो हमारी सेल्फ टॉक होगी वो हम वैसे करेंगे। हमको बस इतना ही करना है। ठीक है, सो इसमें है बट टू सी एंड कॉज, आई थिंक ये हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है रीना, मोस्ट सर्टेनली। Yes, ma'am, यहाँ से start आप कर ये रहा हूँ। प्लीज पढ़िए। Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. मैंने इसको अंडरलाइन इसीलिए कर रखा है, इसको हाईलाइट कर रखा है। इफ यू वॉन्ट टू सी द मैजिक, अगर आपको अपनी जिंदगी में जादू की तरह चीजें बदलती हुई देखनी है, and you want to cause a radical change to your current circumstances. Radical means immediate and huge, quick and huge. Okay, if you want to see a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. बार बार गुस्सा आएगा, बार बार कंप्लेन्स आएंगी, बार बार बुरा लगेगा बातों का, but you have to stay in gratitude. This is a muscle you need to develop. Okay, this is a mental muscle you need to develop, a training that you need to give, and this is a lifelong training. Why should you suffer in any areas? Why can't all the areas, Rhonda Byrne ki tarah, why can't all the areas of our life become amazing? You know, so we will cause a radical change. This has to be our determination also. So let's study, agar aisi life chahiye, your new way of life, to uske liye formula kya hai? haan ji. The magic formula: knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Khaldun al-Muqaddimah, and scholar and statesman. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first, you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life.
To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. The magic formula. Number 1, deliberately think and say the magic words thank you. 2, the more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. 3, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling. So the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. So initially तो देखो रोंडा बर्न कन्विक्शन के साथ हमसे बात कर रही है. वो बता रही है कि देखो ये तो करना पड़ेगा आपको if you really want to live a beautiful life. और practicing gratitude मतलब जैसे ही कुछ होता है हमारे environment में, we find that you know something is very expensive. Suppose आपको कोई dress खरीदना है, you find it very expensive. Immediately say thank you for all the beautiful dresses I have in my closet, in my wardrobe. Okay, we've never said thank you to them, but we keep criticizing that we don't have money to buy more brands. You know, we might be having 10 brands already हमारे closet में, लेकिन हम उनको हमने थैंक यू नहीं बोला है, लेकिन हम आगे चलना चाहते हैं बिना थैंक यू बोले, कंप्लेन के साथ कि हमारे पास पैसा नहीं है ये वाला ब्रांड खरीदने के लिए. Then we will never have more, and जो है वो भी ले लिया जाएगा. The law works is when you're grateful, definitely you will be given more, and when you're not grateful, whatever you have will be taken from you also. So you will see कभी कभी हो जाता है, हम बहुत कंप्लेनिंग कपड़ों के लिए होते हैं, प्रेस से जल जाता है वो, इट कुड बी प्रेस वाला जला देता है, हमसे कुछ हो जाता है, या कहीं वो खो जाता है आउटफिट, वो उसमें कुछ स्क्रैच लग जाता है, उसमें वो फट जाता है, it gets stuck in the nail. Those kind of things happen to our favorite clothes when we are so always in the complaining zone. So it says knowledge तो चलो बहुत अच्छा है, it is a treasure, knowledge is a treasure, definitely. I mean better you are, जितना आप self evolution और growth और development पे लगाते हो, उतना ही ज्यादा definitely as a person भी आप evolve होते हो. But practice is the key to the knowledge. जब तक हम practice नहीं करेंगे, ठीक है, और gratitude practice करना means in worst times you're saying thank you. ठीक है, अच्छे टाइम में तो हम forever, if somebody gives me a beautiful gift, I will definitely, तो बचपन से हमने thank you बोला है, ठीक है, अगर कोई भी चीज हमको अच्छी मिली है डेफिनेटली हमने थैंक यू बोला है ना. अगर किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं. वो थैंक यू तो पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन फिर भी जिंदगी तो इतनी सुंदर नहीं है ना. मतलब कहीं पे कुछ ना कुछ ब्रेक्स हैं, यू नो बैरियर्स हैं, कुछ है, कुछ चल रहा है. सो नाउ वी विल से थैंक यू. Okay, in worse circumstances also, मतलब as bad as it can get, अगर आप उस टाइम थैंक यू बोल लेते हो ना, then that is a key to your life, and you will see that how life opens up in a very beautiful way. So ancient myths and legends, you talk about any Puran, any Upanishads, any Vedas, किसी भी religion की जो scriptures हैं, सब में शुक्राने और gratitude के बारे में लिखा हुआ है.
it says that first say thank you. If you really want to unlock that thing, you want to unlock career, say thank you. ठीक है, पास्ट में जाके अगर पास्ट में जो करियर था उसके लिए भी अगर आपको कंप्लेन्स हैं, योर फ्यूचर करियर लाइफ विल नॉट ओपन अप, एंड इवन इफ इट opens up, it will be short lived. That's very clear. So if we have got money from some institution, ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, wherever, जहां पे हमने पहले जॉब किया है या पहले कोई बिजनेस किया है, कोई बात नहीं, वो खराब हो गया या जो भी है, हमें उसके लिए भी थैंक यू होना पड़ेगा, because you're standing on the shoulder of all your past experiences. So सबसे पहले past को beautiful color करो, thank you का color, ठीक है, उसके बाद हम present and future के लिए definitely करेंगे the way, because ये book हमको assignments की तरह लेके जाती है, step 1, 2, तो हमको रोज की exercises मिलेंगी छोटी छोटी, we will have a lot of fun doing them because they are really truly fun. Some of them will give us goosebumps. कभी कभी हमको रोना भी आएगा, जब ऐसी चीजें करेंगे, कभी कभी गुस्सा भी आएगा, कभी कभी सैडनेस भी आएगी, but doesn't matter. Assignments we have to do all 28. You do those 28 and then you see कि कितना बड़ा door of your life opens up in front of you. You can't even imagine. So to see the radical change in your life, you have to practice gratitude. There's no way out. And gratitude will become a new way of life. New way of life, okay, to have the radical change. That is what we always have to remember. That means in times जब वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तब भी हम thank you बोले, ठीक है, तो इसीलिए हमने पावर बुक में पढ़ा था the only 2 prayers in this world are thank you. अगर हम यही prayer कर लेंगे और like a parrot we keep repeating, you will see your life transforming. ठीक है, so it says that to live in gratitude, अगर आपको gratitude में रहना है, अगर आपको experience करना है जादू और magic अपनी दुनिया में, thank you have to become the 2 words you deliberately say. कभी कभी तो sad situation होती है तो thank you दिल से नहीं निकलता है ना, it doesn't come from your heart, thank you, if you're very unhappy about something, लेकिन फिर भी हम choose तो कर सकते हैं ना, कितनी भी bad relationship हो, कितना भी कुछ हो. 1 second. Babe, I'm like in my session. Okay, I just got it. Huh? Yeah. What? Acha, take it. Okay, bye. 1. Bye bye. Yeah. So it says to live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become. अब ये deliberately word लिखा हुआ है, इसको मैं decode कर रही थी कि कई बार situation इतनी खराब होती है, suppose आपकी किसी के साथ relationship है, it has not been good, okay, and it's just not been good. Whenever you think about it, in fact, you don't want to think and talk about it. You are like that angst against, whosoever person, could be the boss, could be mom-in-law, could be spouse, could be a friend, anyone. ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, there are 100 complaints, agreed, that person has not been nice to you, nasty to you, agreed, okay, but there might be 2 points that you really like. You divert your attention, आप अपना focus उस तरफ ले जाओ जो 2 अच्छी चीजें हैं उनकी, and you will see that the whole energy starts to transform, and the same person जो वैसे behave कर रहा था, जो भी था, ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. आप थैंक यू बोल रहे हो, आप उसमें 2 things you're finding good, and you will see that person's behavior starts changing, and the same person gives so much to you because that's how law of attraction works. There is no other way. Okay, so इसलिए बहुत जरूरी है, और ये deliberately ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि from heart नहीं आता है कभी कभी. If you really, that person has really made you suffer, your heart will not allow you to say thank you to that person in the heart. Of course, in person तो हम उसको नहीं बोल रहे हैं, but उसके बारे में सोच रहे हैं कि चलो उसने हमको ये दिया, हम उसके घर में रहते हैं, maybe sometime we may have had a nice dinner with that person, like that, right? So that is how it is. So we can just go back and think about it in the past when things were very good, jab kuch to, maybe if mother-in-law, maybe she had given you some good sari or a salwar kameez, or something, she must have cooked some nice rajma for you or something like that. She may have done it at some point of time, maybe 20 years ago. Okay, isliye deliberately means you'll have to force yourself to say thank you. You won't feel like
but आपकी life है ना, you want to lead a golden life, you will have to do that. Okay? Then it says that they need to become, thank you needs to become your identity. You have to tattoo this word, your identity. Tony Robbins says always in his sessions that change your identity, change your life, change your story, change your life. These two things I'm always hooked on. That's why I keep repeating. Whatever I learn from him, मैं आपको आके बताती हूँ. Because he is my core mentor of life. I blindly follow him. That's what I was saying. If he says that you have to hang upside down, I will not question him. I will do that. If he says that you have to script this, you know, I will script it no matter how busy I am. So he's forever been my mentor. I have a huge love and respect for him. You know, whatever I am today, I owe it to Tony Robbins. You know, and he says this: change your story, change your life. अपनी जिंदगी की कहानी आगे आप बनाओ. You are the script writer of your destiny. Don't give that power to someone else. Write your script. Okay. So that's what Sunita was also asking me the other day when we were walking, that, you know, she was like that, you do so much of scripting, mujhe bhi sikhao. Then I told her that how I scripted for my Singapore trip, and how I scripted whenever there's some issue, I write a nice letter, you know, very lovingly, dear universe, this is this, whatever it is. So I make my own future. I make my own script. I write it. And that's how it works. Okay? So that's how you have to carry on and continue in your life. So script more, change. What's your story? That has to be your destiny. So decide that. Think more about it, your story, and change your identity. What's our identity now? Thank you. Rhonda Byrne says thank you should be your identity. So it will be. We will make it our identity. Okay? So thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. You know, if you want to live the life of your dreams, you have to cross on that bridge. That bridge is made up of thank you. So you have to step on every, जैसे bridge में वो होते हैं ना wooden planks, हर एक thank you, thank you, thank you, and you cross that bridge. जहाँ पे भी you are right now in your life and where you want to reach, there is no other way. You try anything. You can sit in the temple for 10 hours, you know, you can, whatever you can do. Nothing works. This works the fastest. Okay. So of course you can continue worshiping your gods. You know, all the religions are beautiful, and all the religions are teaching us this. All the religions are teaching us, you know, thank you or shukrana. I mean, you name it, Rhonda Byrne has explained it. But that inner change needs to be there. That inner change, you know, ये inner worries होती है ना, उनको हमको cover up करना पड़ेगा. Thank you से. और magic formula बस यही है. Deliberately think and say the magic words thank you. So deliberately इसलिए लिखा हुआ है because for months it does not come from heart sometimes, especially for the things that have been toxic. It will not come from the heart. There are people you really hate in your life. There might be that who you really hate in your life, okay, who've caused you a lot of trouble. You still have to, you know, kind of say thank you for that situation, for that, and derive that. It will be very difficult to understand right now, but as we grow in the book, हमको धीरे धीरे किताब में जो assignments मिलेंगे, उससे हम अलग तरह के इंसान बन जाएंगे after 28 days, और हमारा व्यू पॉइंट ही चेंज हो जाएगा, और फिर the door of success in all the areas life में खुलेगा. So इसलिए फॉर्मूला का फर्स्ट पॉइंट है, इस फॉर्मूला के 3 पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट है डेलिबरेटली, मतलब अपने आप को फोर्स करो थिंक और से करने के लिए. सोचो और बोलना, मन में भी सोचना एंड बोलना. थिंक एंड से, इट्स नॉट जस्ट से. थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू. फॉर्मूला का सेकेंड पॉइंट है, जितना ज्यादा आप डेलिबरेटली थिंक एंड से करते हो थैंक यू, उतना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो. ठीक है, अपने आप अगर रिपीटेड करते रहो, आपकी फीलिंग्स चेंज होने लग जाती. कभी करके देखना. So yesterday when I was just walking, I was just saying thank you. मैंने 7 minutes बोला. 7 minutes में इतना feeling में elevation आ गया था. मतलब को non-stop just with every step thank you, thank you, thank you, thank you. जो magic footsteps है that we will study in the chapters ahead. And the more gratitude आप deliberately think and feel करते हो, उतनी ज़्यादा आपको abundance मिलती है. So it's a journey. We are all in this journey together. So it says it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. इसलिए हमको अपने आप को happiness zone में रखना होता है. अगर हम इस sadness zone में जा रहे हैं, lack में जा रहे हैं, deficiency में जा रहे हैं,
तो आप अपनी gratitude walk कर लो, thank you, thank you, thank you, or you can write thank you, thank you, thank you, जितनी जब तक आपकी feeling change नहीं हो जाए. It's not about 50. There are times when in 50 times आपकी feeling change हो जाएगी. There are times जब frequency को elevate होने में maybe 200 लगेगा, आपको 200 times thank you लिखना पड़ेगा. There are times जब आप gratitude walk कर रहे हो, movement really brings in the change. Okay, movement brings in the change. So move more, like walking here, walking outside. That would really give you that, movement plus gratitude combined gives you a quick change. So we will have to do it because it is the feeling that accelerates the magic in your life. And like Newton's law of motion, what you give, you receive equally, right? So बस यही चीज है last वाला. It says that जब हम discover कर लेते हैं कि कितना आसान था, how easy it is to live an abundant life. So then we see the magical results ourselves, or hum वापस, we will never want to return to the life we were leading earlier. That's what it says. You will never want to return to the life you used to live. You will never want to do that. And this paragraph again is a permanent tattoo we need to make. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot, every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. You yourself will be surprised all the time. Okay, and that's how beautiful it is. So we go to the magical book. So we are talking about this book now, जो हम पढ़ रहे हैं, The Magic Book by Rhonda Byrne. और इसमें ये बहुत सारी books रखी हुई है. ये couch के ऊपर there is a book और उसमें से बहुत सारा illuminate कुछ निकल रहा है, illumination, because that's how beautiful it is. We are talking about this book. इसके illustrations इतने सुंदर हैं इस book के सारे. Yeah. Please read, Reena. Are you there? Sorry, yeah, I'm here. A magical book. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy, 35th President of the United States. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desire and your biggest dream come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamt of. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more.
These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true, and you will see the circumstances of your life magically change. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, resolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28 magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life and that you want to change or improve, and you could do that practice 3 days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or 2 practices a week. The only difference being that it will take you longer to see the changes in your life. After the 28 days. No, 1 second, Reena. So इसमें ये जो बुक डिजाइंड है उसमें बहुत क्लियरली शुरू में लिखा हुआ है बेसिकली वी नीड टू चेंज द पैटर्न इन अ सबकॉन्शियस माइंड. सो हमारी बॉडी जो 100 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस इज इक्वल टू गॉड is present in all 100 trillion cells, है ना. वो अपने आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको पता है कि उनकी लाइफ स्पैन कितना है, 30 डेज के बाद वो खुद सुसाइड कमिट कर लेते हैं और नया सेल उसकी जगह बन जाता है. खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, खाने के हिसाब से एमाइलेज एंजाइम्स और लाइपेज जो भी हमारे निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, वो सब अपने आप ऑटोमेटेड प्रोसेस पे होता रहता है. कौन चला रहा है उसको? गॉड इज रनिंग द होल शो, राइट. हमको तो पता भी नहीं है. So we are puppet in the hands of God inside involuntary functions. हमको पता है अभी हार्ट कैसे बीट कर रहा है, कितना एक्सपैंड हो रहा है, कितना ऑक्सीजन उसमें जा रहा है, क्या वॉल्यूम है उसकी, किस तरह से वो प्यूरिफाई हो रहा है, कैसे वो लंग से ऑक्सीजन लेके हार्ट के पास जा रहा है, हार्ट कहाँ सप्लाई कर रहा है, ब्रेन इस वक्त क्या क्या न्यूरोकेमिकल रिएक्शंस ब्रेन में चल रहे हैं. वी डोंट नो. दैट इज गॉड डूइंग इट फॉर अस, राइट. सो ऑल आर 100 ट्रिलियन सेल्स, ओके, एंड द सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे अंदर है, हम उसको रिप्रोग्राम करने का मतलब दिस होल प्रैक्टिस जो है ये उसको रिप्रोग्राम करने के लिए. सो टू क्रिएट न्यू पैटर्न्स इन द सब. अभी क्या पैटर्न है? वरी, फियर, घर नहीं हो रहा, मेरा कोर्ट केस चल रहा है, माई जॉब इज नॉट दैट गुड, मेरा बिजनेस में इतना सेल नहीं हो रहा है, अगेन आई हैव टू पे द मनी फॉर द स्टाफ, अगेन आई हैव टू डू दिस, okay, all those things. And you will see that how it all starts transforming. So 28 days के जो assignments हैं, हमको practices मिलेंगी, बहुत cute, बहुत fun वाले practices हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा time देने की जरूरत नहीं है, because आपका way of life ही वैसा हो जाता है.
but मजा आएगा. You'll enjoy doing it, and you will see आपके outward circumstances like as a miracle is happening in your life. You know, this is how it seems. That is it a miracle. If you really do sincerely the practices, you will feel that your life is a miracle. Your life is a magic and miracle. Okay, that's what is mentioned on my vision board also. That my life is full of magics and miracles. And you would see that, you know, outward reality aapki change hoti ja rahi hai, and then you wonder that how did it happen, man? I mean, what did I do for this? You know, like it's really so amazing. So isliye humko ye 28 practices diligently karni hai. ठीक है, diligently करनी है. और ये practices divided है 3 parts में. The first 12 chapters जो है, the first 12 practices, उसमें हम past and whatever past की वजह से what present we have, उसके लिए we will be grateful. Okay, so whatever the way, मतलब money के हिसाब से वो सब हमको chapters बताएंगे. So let's do that. We will practice that one day at a time. So वो हम पूरा करेंगे. उसके बाद 13th to 21st chapter जो है, that's about you're only working on your dream list. So we will be making the dream list tomorrow. हमारा first assignment है कल का. So उस dream list पे हम work करेंगे, and you will see that that dream list will start coming around, and you will start ticking off the things. And you might have had very large dreams in your list. You know, sometimes they're really large, something that which has never happened before, but now you will see it happen. Just wait and watch. Okay, wait and watch, because I'm telling you that. Okay, so, and you will see them happening. फिर 23rd to 28th chapter, we will take gratitude to another. एक अलग ही सीमा पे पहुंच जाता है gratitude, जहां पे हम alchemists बन जाते हैं. जो हम बोलेंगे that will become true. You know, मतलब जो हम सोचेंगे वो हमारे सामने आ जाता है. हम दूसरों का, मतलब हम अपनी जिंदगी में जो हमने पावर अटेन की है 22 चैप्टर्स तक, उसको हम दूसरों की जिंदगी को ब्यूटिफाई करने के लिए यूज करेंगे. You know, so that the world becomes a better place to live in our own little way, in our own little contribution that we can make to the world. Okay, that's what these chapters are all about. And clearly लिखा हुआ है कि ये रोज करना पड़ेगा. If you happen to miss, देखो अब तो miss नहीं होना चाहिए. In earlier I thought that, you know, 6 to 7 कई लोगों के आंख नहीं खुलती है. Some people love sleeping, so they're sleeping off their dreams, which was okay earlier. ठीक है, of course the practices are way more powerful if you do it in Brahm Muhurat, ambrosia hours, Amrit Vela. ठीक है, practices are way more powerful अगर आप इसको अमृत वेला में करते हैं. That is before the sunrise. So if you do the practices, like count my blessings has to be invariably done before the sunrise. सूरज उगने के पहले आपको जो हम practice number 1 है वो हम करेंगे. तो उस टाइम में सुबह अमृत वेला में 10,000x पावर होती है हमारे जो भी हम बोलते हैं और लिखते हैं. ठीक है, अमृत वेला में 10,000 गुना पावर होती है. तो उस वक्त डेफिनेटली बहुत जल्दी आप देखोगे कि अमृत वेला में आप लिखोगे या यू नो ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं आपको वो भेज दूंगी जो टेक्स्ट में हर मंथ भेजती हूँ. द इम्पोर्टेंस ऑफ वेकिंग अप अर्ली, but that also means importance of sleeping early. I don't want you guys to be sleepless and rubbing your eyes and dozing off during the day just because you've woken up early. So उस वक्त आपकी पावर ही अलग होगी. आपकी फट 1 2 3 4 like this, your dreams are going to get realized. Okay, if you do it in the ambrosias. But no, doesn't matter. If you want to do it later, अब तो YouTube है. अब सेशंस क्यों मिस होने चाहिए? ठीक है, आप YouTube पे हैं, हम लोग हैं, तो आप उसको दोबारा से सुन लो. ठीक है, अगर सुबह का सेशन मिस हो गया, listen to it again. Okay, prioritize it. What you prioritize is going to shape your life. There are some people whiling away their time, you know, just roaming around from here to there and all of that. You will realize that एक तो importance भी पता लगेगा समय का, you know, कितना importance होती है समय की. फालतू की चीजें करने से अच्छा है कि बस thank you लिखते रहो. You know, and endlessly people are just watching one web series after the another. वो सब coping mechanisms, हमें coping mechanism नहीं चाहिए होंगे. We will become like a different person. You know, of course you have to enjoy your movies and all. I have nothing against that for sure. Okay, enjoy your movies, enjoy your Netflix, you want to watch something, web series, but at least have that self-control to say where you need to stop. You know, don't binge watch. There is something called watching and there's something called binge watching. Okay, so if you're binge watching, you are overdoing it. Okay, that your life is not. आपको अपने dream life lead करनी है, आप binge watch करके नहीं कर सकते.
You do dedicate your 30 minutes to watching your whatever you're watching. Rest of the time, try and utilize your time in multiple other ways. अभी तो इतनी practices मिलेंगी तो इतना मजा आता है सब करने में. और एक भी दिन अगर आपका मिस हो जाता है, suppose you've not done the practice for today, you have to go -3 days. ठीक है? So now you will not be in line with the sessions, because इसमें तो हम 1, 2, 3, 4 every day we will be progressing. ठीक है? There you will have to stop, you'll have to go back 3 days. या तो 3 दिन की एक ही दिन में practice कर लेना, so that you can move forward. But वो 1 घंटे का ये session होता है, तो आपको बार बार सुनना भी तो पड़ेगा 3 hours के लिए एक दिन में to be doing the practice. Okay, or you can read it on your own and do that practice. But if Rhonda Byrne says that you want to go, you have to go -3, don't ask me, don't message me separately and ask me that I missed today's practice, should I go back 3 days? Of course you have to. Everything is written here. Of course you have to go back 3 days. Okay, and do that practice. There's no doubt about it. If Rhonda Byrne says something, so I will repeat the same. Okay, because I also follow her blindly, like all my mentors blindly. So 1 second, just see the time. It's 6:41. Thank you, Reena. This is all we would be reading today. कल हम ये wrap up कर लेंगे. हमारा बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है इसका. Thank you, ma'am. Thank you so Ritu. much. Thank you. And Ritu, I'm so sorry because I had committed to Reena yesterday, I think when she was reading कि आप कल पढ़ लेना. But then of course ये रोज के sessions है. We would love to have you read as well. Ma'am, it is Thank you, Ritu, once 6:47. again. हाँ, तभी तो हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम दूसरा बुक पढ़ रहे हैं. So this is the second book that we study is called The Power of Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy, जिसने हमारा thought process अभी तक पूरा change कर दिया है. This is chapter number 10. अगर आपको बाकी के chapters पढ़ने हैं तो you can go back on the YouTube channels और उसमें आप सुन सकते हो इनको day 0 से. ठीक है? So जब भी आपको time मिले, whenever you go for a walk, so I utilize my 1 hour of walk in the morning and 45 minutes of walk in the morning, or 45 minutes of my strength training also that I do. I utilize it to listen to these, to my mentors and audiobooks. And evening also I do that. Evening I move around for about 40 minutes. So then also I utilize, that is my self growth and training and development जो मैं करती हूँ. तो मुझे बहुत पढ़ने लिखने का बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा शौक है. So that's my जुनून जैसा शौक है. I love studying, studying and learning new things always, So I read these books, so you can actually go back, you can read it on your own. Power of the Subconscious Mind is available on YouTube as an audio book also in Hindi and English. Hindi और अंग्रेजी दोनों में है. आपको जो भाषा में कंफर्टेबल लगता है आप उसमें इसको सुन सकते हो शुरू से day 0 से. और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आपको मेरा YouTube पे ही देखना पड़ेगा चैनल, क्योंकि कई सेंटेंसेस को डिकोड करना पड़ता है और साइंटिफिकली किस तरह से ये हमारे लाइफ में वर्क करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो हम इसमें करते हैं. और ये हम थोड़ा चैप्टर करते हैं. अभी day 1 जब शुरू होगा तब से अब मैं उसको डिवाइड कर दूंगी, 30 minutes this and 30 minutes that, because हमको इसको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है अच्छे से. बट हम बहुत च्यू करके इसको पढ़ते हैं ताकि ये इम्प्रेस हो जाए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. अभी हम पढ़ रहे हैं the 3 rules of success, the 3 methods how we can get successful in our life. पहला वाला था मतलब करियर सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट रूल था लव योर जॉब, और what you want to do आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो. इट इज सिंपल दैट यू हैव टू मेडिटेट, और आपको इनर वॉइस आपको बता देती है कि कौन से फील्ड में आपको जाना है. अदरवाइज यू हैव टू लव योर जॉब, जो रॉन्डा बर्न जॉब वाले चैप्टर में बताएंगी. You have to love your job and be very excited about starting your work day every day of your life. Only then job accelerate होगा. You should not be feeling low and all that, because अगर आपको output चाहिए job में बहुत successful, उसके लिए आपकी feelings बहुत elevated होनी चाहिए, happiness zone में होना चाहिए. worry zone में आपका outcome नहीं आता है. And that's how it works. Okay, तो कल हमने ये पढ़ा था that love whatever you do and put your 200%, 500%, whatever you into it. Okay, and आज वाला है second step. So yeah, Sunaina. Yeah. The second step, Deepti, I'm audible? Okay. The second step to success is to specialize in some particular branch
of work and know more about it than anyone else. For example, if a young man chooses chemistry as his profession, he should concentrate on one of the many branches in this field. He should give all of his time and attention to his chosen specialty. He should become sufficiently enthusiastic to try to know all there is available about his field. If possible, he should know more than anyone else. The young man should become ardently interested in his work and should desire to serve the world. He that is the greatest among you, let him become your servant. There is a great contrast in this attitude of mind in comparison to that of the man who only wants to make a living or just get by. Getting by is not true success. Man's motive must be greater, nobler, and more altruistic. He must serve others, thereby casting his bread upon the waters. Yeah, basically second step, 1 second सुनैना, इसके बाद फिर third step है ना, तो second step we can decode it like that, जो भी आपका profession है, उसमें आप number 1 बनो. In the sense that जितना depth of information and knowledge आप उस particular stream के बारे में gather कर सकते हो, उतना करो. हम में से, you know, is a school teacher and is teaching the subject of physics. अब फिजिक्स के बारे में आप पढ़ो, आप देखो कितना ज्यादा और आप स्टूडेंट्स को बता सकते हो, कितनी डेप्थ ऑफ नॉलेज से आप बता सकते हो. देयर इज सो मच दैट इज इवॉल्विंग ऑल अराउंड. ठीक है, किताब में लिखा हुआ है, एक चैप्टर है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क सपोज, बट आप ऑलवेज ट्राई टू नो मोर. अपने फील्ड में चैंपियन बनो बाय कॉन्स्टेंटली स्टडिंग एंड गेटिंग टू एनहांस योर नॉलेज. ओके तो इसमें यही लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में दिया है डॉक्टर मर्फी ने कि अगर कोई किसी ने केमिस्ट्री को अपना प्रोफेशन चूज किया है तो नाउ ये उसको पूरा अपना अटेंशन टाइम अपनी चोजन स्पेशलिटी पे डालना चाहिए. ठीक है, और उसको बहुत एंथुजियाज्म लेके लाना है अपने वर्क के लिए. सो दिस इज व्हाट व्हेन आई ट्रेन माय टीम आल्सो आई टेल देम दैट एवरी डे शाम को आप लुक बैक करो अपने वर्क डे पे. सो हमारा वर्क डे जनरली खत्म हो जाता है 6:30 6:45 तक. उसके बाद भी कम होम 1 घंटे का हम सबका कम्यूटिंग टाइम होता है. आई से व्हेन यू गोइंग बैक होम ऑन द वे बैक, always look back that how have you contributed today to your job and how were you innovative. How were you, like how did you take that initiative that yes, this is something we can do, and what have you contributed today and what value addition did you get. This I tell to every person in my team who've been with me, that how have you contributed. You know, we are not, इसमें भी लिखा हुआ है, we are not there just to while away our days, you know, and just to get by apostrophe में लिखा हुआ है. We are not there to just get by. People are working like, you know, मतलब इतने aimlessly और job को secondary रख के उनके लिए ये मतलब बाकी की चीजें important होती है. So it is like, you know, that your vocation is very important. It is priceless. So अपना 500% उसमें दो and every day look back and think that how have I upgraded my knowledge, what have I done, what contribution have I made, मैंने क्या value add किया. ठीक है, ऐसे थोड़ी है, अदरवाइज देयर आर पीपल, ठीक है सैलरी मिल रही है, चल रहा है, रोज सुबह वो रोबोटिक तरीके से उठ के जा रहे हैं, यू नो, फिर उसके बाद आ रहे हैं और फिर आधे टाइम बॉस के बारे में वाइनिंग कर रहे हैं, फिर रूल्स के बारे में कर रहे हैं कि ये रूल्स हैं, छुट्टी कम मिलती है, ऐसा हो रहा है, ये करना पड़ रहा है. स्कूल टीचर्स को हो सकता है बच्चे बहुत परेशान करते हो, मतलब नॉन स्टॉप वाइनर्स हम लोग होते हैं, लाइक यू नो. अब वो तो है ही, ये जॉब चूज किसने की थी. अगर कोई स्कूल टीचर है या इफ आई एम वर्किंग एट अ कॉर्पोरेट, सो सबको पता होता है कॉर्पोरेट कल्चर कभी होता रहता है इधर उधर कुछ. So to accept that, no, I mean like, so this is how it works actually. So we have to be firstly grateful, ये तो हमने वहां से सीखा ही है, and secondly हमारा attitude has to be that add value to your work. Very, very, very important. Things are changing and evolving every day. Keep up with the changing trends. वही थोड़ी है यार 25 साल के पहले का
फिर उसके बाद सब लोग ये बोलते हैं कि पता नहीं आजकल लोग यूथ को क्यों ज्यादा लेते हैं कंपनीज में, they don't want to take grey head people, they will not, because those people have not evolved with time. वो अभी भी फंसे पड़े हैं, उनकी जो 30 साल पहले के जो विचार थे, जिस तरह से तब लोग चीजें करते थे, अभी भी वो वहीं फंसे हुए हैं। आप टाइम के साथ मूव हुए हो क्या? यू हैव टू मूव विद टाइम, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, ट्रेंडिंग, द थिंग्स व्हिच आर ट्रेंडिंग, टू नो दैट दिस इज व्हाट वर्क्स टुडे। जैसे जब हम डाइट कंसल्टेंसी पहले करते थे, आज से अगर इफ 30 years, 20 years ago, if I would do it, I would not make diet consultancy for diabetes and this and that. तब problems ही कुछ और थी। जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा था तो वो अंडर न्यूट्रिशन था वर्ल्ड में, मतलब the world was gripping with undernourished people, and there was a lot of malnourishment, जिसके कारण आज की तारीख में सब खा खा के इतने मोटे हो गए हैं। तो अब हमारा वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है स्ट्रीम, जो जब मैंने पढ़ा तो हो गया है। सो आई हैव केप्ट अप विद द चेंजिंग ट्रेंड्स। नो, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी की वजह से जो डिजीजेस होती है, लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस होती है, या बोन इश्यूज होते हैं, मसल इश्यूज होते हैं, या जो होता है। पहले हमने मेनोपॉज का एक चैप्टर आया था और चला गया था, ठीक है। अब मेनोपॉज करियर बन गया है लोगों का। I mean, we've actually made a career out of it because that is the trending problem. So now we need to deep dive. I had not studied menopause to that extent, but now I have. In the last 10 years, I have deep dived into menopause and the changes कैसे होते हैं और कैसे उनको elevate करें, ठीक है। सो आप ट्रेंडिंग जो हो रहा है अभी चेंजेस है, उसके साथ टू कीप अप एंड काइंड ऑफ डीप डाइव इनटू गेटिंग द बेस्ट नॉलेज एंड मच मोर देन व्हाट वी सी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, ये हमको लगातार करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी ऑफ अस हु आर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग, आई एम कॉन्स्टेंटली स्टडिंग, आई नेवर सिट वेस्ट अवे माय टाइम एंड जस्ट वाचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज एंड दिस एंड दैट। बहुत पढ़ाई करती हूँ, मेरा पूरे टाइम यूट्यूब, इवन व्हेन आई एम वर्किंग आउट मेरा यूट्यूब चलता रहता है, जिसपे गाने और पिक्चरें नहीं चलती है कभी, ठीक है। उस पे वो चीज चलती है जिससे मुझे इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मिलती है, बिकॉज वी हैव टू सेल्फ डेवलप आवरसेल्व्स एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो इट सेज द यंग मैन शुड बिकम ardently interested in his work and should desire to serve the world. That's also very important, that how I can know more so that I can give away. So any conference when I attend, एनी दिस थिंग, जब भी कुछ भी ऐसा होता है और वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके मुझे अगर वहां से 2 की पॉइंट्स भी मिलते हैं ना, आई इमीडिएटली कम बैक टू VLCC and I take a webinar on that topic. Okay, I never waste same month, same week, maybe agar same week I'm not traveling, same week I do it, because I am a channel through which, that's flowing, that information and knowledge is flowing. And anyone who's from, who's done a course from VLCC know that I always have a new topic to talk about. I always have a little more that I want to give. I always have to have, I value add to the work, because we are just the channels, हमारे through flow हो रहा है, ठीक है। But हम इतने मतलब इतना कूप्ड अप रहते हैं, जैसे ब्लाइंडर्स लगा के, जैसे हॉर्सेस के लगते हैं, उस तरह की लाइफ आई डोंट नो कितनी सेल्फ ग्रोथ हमारी हो रही है। So that is the real diamond that we attain, that even if it is like sales getting better, how can I improve my sales? Do a sales course. There are so many free sales course available on Instagram. Social media is bombarded right now. Use social media more. वहां पे इतने सारे आपको वो मिलेंगे, कि sales के कौन से वो हैं, क्या तरीके होते हैं, how to boost sales, how to become that person, like you talk and immediately the person wants to join you. So how you can become that kind of a person, what are the sales hacks, how can you address when somebody is not joining your company or whatever, like is tarah ki itni sari digital marketing media, itne courses jo Instagram and YouTube pe free hote hain. I have so many friends jinke bachon ne guitar bajana, vocals karna, भरतनाट्यम करना सब YouTube से सीखा, and today they are performers and they're professionally working in that field. And there are some people who are just watching movies. So we have used YouTube in different ways, right? मैंने सारी ऑडियो बुक्स YouTube पे पढ़ी हुई हैं, all of them. So मतलब of course like मेरे पास सबकी हार्ड कॉपी है. It's not that I don't have the hard copy, because I also underline and I read, but then at least like because मैं इतना transit में रहती हूँ, we have to work out, we have to run, we have to do our whatever exercises हम करते हैं, तब हमारे पास टाइम है. जब हम travel करते हैं, commute करते हैं work place पे and back, तब हमारे पास टाइम होता है. Do a lot of self growth and use that knowledge to transfer it to the others. Okay, that's very important.
And so although we are kind of done here. हाँ चलो एक ही पैराग्राफ पे सुनैना पढ़ दो, just few lines. Okay. The third step is the most important one. You must be sure that the thing you want to do does not redound to your success only. Your desire must not be selfish, it must benefit humanity. The path of a complete circuit must be formed. In other words, your idea must go forth with the purpose of blessing or serve the world. It will then come back to you pressed down, shaken together, and running over. If it is to benefit yourself exclusively, the circle or complete circuit is not formed, and you may experience a short circuit in your life, which may consist of limitation or sickness. So the third step to success is that contribute to the world. बुद्धिज्म में भी हम बोलते हैं कि जब भी आप प्रे कर रहे हो टू गेट अ वेरी गुड करियर, सो 3 चीजें याद रखनी होती है, ब्यूटी, बेनिफिट एंड गुड. ब्यूटी मीन्स यू शुड लव योर जॉब. बेनिफिट मीन्स दैट you should get a good money out of it, and good means it to serve humanity. So बुद्धिज्म में भी यही चीजें हैं. ठीक है, पैसा भी उससे मिलना चाहिए, आपको उससे प्यार होना जरूरी है अपने काम से, एंड गिव टाइम टू इट, वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ ग्रोथ. एंड थर्ड इज गुड, दैट मीन्स इट विल सर्व द ह्यूमैनिटी. तो जो लोग भी यहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, उन लोगों का तो बाय डिफॉल्ट यू आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी. Okay, maybe you can add more to, there's always a scope of growth. You can serve humanity in a more better way. Maybe apni skill ko upskill karna is a 365 day process. वो करके then of course जैसे हम लोगों का भी जो consultants हैं, they are also bringing good to the society. Writers है, जैसे सुनैना है जो अभी पढ़ रही है, she is benefit, she writes on strong subjects, like homosexuality and all, so she's also bringing good to the society and changing the trends that people were not accepting, that तो उससे बहुत acceptable और उनको honor देना, तो उस तरह से. So I would feel every job, my chartered accountant, although हम CA का वैसा वाला बहुत office job है, but इतना ज़्यादा वो humanity को serve करते हैं. My CA is amazing. I mean, the way he made me save my taxes, he was referred to me by my friend, and the way he's helping me save my taxes, he keeps giving me ideas. आप ऐसे कर लो, अच्छा आप उसमें, फिर जब मुझे invest करना होता है, नहीं आप उसमें मत करो, आप इसमें करो, ठीक है, constantly. एंड इतना मतलब वो जैसे टीडीएस भी फाइल करते तो ऑलरेडी मुझे करना होता है ना, बिकॉज सारे ओटीपीज मेरे पास आते हैं. सो वो फट से, मैम आपके पास एक ओटीपी आया होगा, ये देना, ये करना, और इतने अच्छे से. And he saves all my taxes and he takes the money after, after I have got the tax refund. Like मेरे बैंक में अगर सपोज 4 लाख रुपए आ गए, उसके बाद वो अपनी फीस लेते हैं. वो तब तक नहीं लेते जब तक मेरे बैंक में नहीं आते. तो मुझे इतना लगता है कि my God, even my friend was raving about him and saying that he's very good with his work. आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, और वो आपको बताता रहेगा कि अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं, आप इसकी जगह ये ले लो, इसमें ज्यादा बेनिफिट है. So for about a year I'm following him and I'm seeing that, मतलब मेरा जो मैंने आपको पहले भी एक्सपीरियंस शेयर किया था बिगर, so even there he's contributing to the world by his skills. So उन्होंने अपने आप को अपस्किल किया है ना. मुझे नहीं पता था कि वो लोन अफेक्ट करता है और लॉन्ड्री बिल ये होता है, इसका ज्यादा होता है, उसका कम होता है. दैट मीन्स ही इज एजुकेटेड हिमसेल्फ इनटू हिज स्किल, और सब कुछ उनके टिप्स पे, उनको कभी किताब नहीं खोलनी पड़ती है. मतलब कौन सा वाला गवर्नमेंट का रूल है, लाइक 80cc फॉर्म है, अच्छा इसका ये है वो है, सब कुछ उनके टिप्स पे है. तो अपस्किल किया है ना उन्होंने अपने आप को, isn't it? अपने ही तरीके से. So that is how it is. So every person is contributing. Of course there are doctors, there might be times who are very rude to the patients, they think that they are gods and whatever, but there are very human doctors. I mean, I see my mother's like eye surgeon was so amazing. I mean, every time उनके ऑफिस में जाके उनकी वाइफ पूरी दिखती है. Everybody so super soft. You ask anyone, मैंने आज तक किसी को गुस्से में irritated होके, and there are so many patients in that hospital.
इतने काम, इतने कॉम्पोज्ड, और वो बस मतलब जैसे माय मदर वुड से थैंक यू दैट आपने मुझे विजन वापस दे दिया, तो मेरे मम्मी के दोनों हाथ पकड़ के बोलते हैं अरे ये मैंने थोड़ी किया है, ये भगवान की देन है, भगवान मेरे थ्रू कराते हैं काम. You know, like which doctor talks like that? And he's a Padma Shri awardee by the president. So, you know, like people can be really humble, whereas there are people who've not achieved anything, but you see the language, they are rude. You know, they are very rude to people. They have not achieved anything. It's not that they are great sheikhs or something. Still, they are rude to people. ठीक है, वो काम भी नहीं कर सकते जो अगला कर रहा है. Especially when people call center people call you. Please be very, very mindful. I keep telling all of you, credit card बनवाने वाले, आपको personal loan चाहिए क्या, आपको घर बेचना है क्या, प्रॉपर्टी डीलर के फोन जो आ रहे हैं, बी वेरी कर्टियस. और जैसे ही वो फोन आया कि मैडम आपको क्रेडिट कार्ड बनाना है, सर आपको ये करना है क्या, आपको अपनी पुरानी कार बेचनी है, ब्लेस देम विद टारगेट फुलफिलमेंट. Okay, bless them and, you know, put magic dust जो हम पढ़ेंगे. For some of you, you don't know magic dust. Bless them with a target achievement. कि उनका जो भी target है, at least they are going out of their house and they are working and they are अपने hard work से लोगों की गालियां सुन के अपना पैसा कमा रहे हैं वो लोग. You know, which is so bad. How mean of us. इसीलिए तो हमारे पास पैसा नहीं है. इसीलिए people don't treat us with respect and love, and इसीलिए हो सकता है love is not coming to our life because we're very rude to those people, to all calls. I've not seen anybody, very few people I think जो हम इस zone में है, but we are the only people who pray for those credit card people and personal loan चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए. उन लोगों को हम लोग इतना respectfully वो करते हैं और उनको pray करते हैं कि उनका target पूरा हो जाए. ठीक है, सो हमको पता नहीं होता है कि उस एक चिल्लाने की वजह से या उससे रूडली करने की, क्या बार बार फोन कर रखा है एंड ऑल दोस थिंग्स दैट वी से, उसकी वजह से हमारे 5 जगह से आने वाले पैसे बंद हो जाते हैं. ठीक है, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, ये पावर बुक में हमने बहुत अच्छे, इस बुक के बाद हम पावर बुक दोबारा करेंगे. उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि आपने सड़क पे एक छोटा बच्चा, उसको एक 2 रुपीज का बिस्किट का पैकेट दिया जो पार्ले जी का होता है, उसकी वजह से आपकी 10 लाख की पेमेंट आ जाती है. You know, you don't know how it works. So it is. आप सड़क पे जा रहे हो, you've let someone else go pass by, उसकी वजह से आपको biggest tax refund मिल जाता है. So you don't know कि एक smile भी अगर आपने किसी को दी है, उसकी वजह से आपका क्या benefit हो रहा है, कहाँ से. You know, so that is how law works. So very important to always keep in mind that you are a channel to bring goodness to others' lives. Instead, we bring rudeness to others' lives sometimes. Right? So we don't check our behavior at these basic little points that we need to remember. So being extremely courteous and using your life as a channel for others, very, very, you're just a channel, you're a medium. Okay, so universe or humanity ke beech mein, you are a medium. So universe is coming through you. Always remind that, use your life as a medium, then you see that kitna zyada aayega. Universe ka to wo pura, you know, it's not a shower, it is like a chappar faat ke blessings. You know, that force is so powerful. जैसे समुद्र होता है, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स वैसे होते हैं, like a sea, it is endless, it is infinite. You cannot, if you start going the sea and you want to scale it कि चलो मैं इसका distance measure, आप कभी नहीं कर सकते. घूम फिर के सारे sea एक दूसरे से मिले हुए हैं throughout the earth. ठीक है, so that is how magnanimous the universal power is. But have we kind of really realized that वो जो power है, जो magnanimity के साथ that's flowing into our life, and you're just a channel, but हम caught up हैं अपने, consumed by our personal things and this and that. No, work the way the mentors are telling us. Gratitude, love, you know, gratitude and love feeling chart में are the topmost feelings there. So invest more in all of that. Invest more in gratitude. Invest more in blessing others. Invest more in loving your life. Invest more in doing things for yourself. Invest more in thinking about what do you want. Not what the children want, not what the husband, nobody. I mean, the dream list आप देखो, आपकी पूरी consumed है किसी किसी के बारे में सोचने के लिए. What's your life? उनकी लाइफ चेंज होनी होगी तो वो आ ही जाएंगे ना सेशंस में. उनकी लाइफ और अपने आप इल्यूमिनेट कर ही पाओगे ना उनकी लाइफ को. अगर आप खुद ही सन बन गए, आप सूरज बन गए, तो उनकी लाइफ इल्यूमिनेट. आपको क्या चाहिए? व्हाट हैव यू मेड आउट ऑफ योर लाइफ? आप आइसोलेट करो अपनी जिंदगी को कि कोई आपके साथ नहीं है अभी. आप you know, how are you living your life? Are you able to pay for all your expenses? Are you able to pay for all your luxuries? Are you able to do the courses that you always wanted to do without taking money from someone else?
Are you able to do all the things that you really love? Are you able to, do you have the body that you want to have? The health, do you have the health that you want to have? So these are your dreams. To have the best of health, to look whatever you want to look like, to what वो अपने dreams है. अगर आपको लगता है I need to lose 4 kgs of weight, that should go into your dream list because that's your dream. If you want to earn that kind of a money or receive that kind of a money for yourself, that's your dream. Okay. Do you want to do a course, educate yourself? That's your dream. You want to travel to whatever country, you want to go to London, you want to go to Bali, that's your dream. Okay. Of course, others will be going with you, all that, but work on yourself. Rhonda Byrne ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि आप अपने आप देगा और आप स्ट्रगल ही करते रहोगे. अपने आप को आप प्रायोरिटी देने लग जाओ, अपने आप पूरी दुनिया आपको प्रायोरिटी देती है. ठीक है. और अपना योर लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, you know, so you have to fall madly in love with yourself. Nothing matters. So dreamless, Rhonda Byrne से हमने सीखा है that in fact even magic wand जब हम दूसरों के लिए करते हैं, even then she says that अपने आप को रखो उसमें, that वो person आपको बता रहा है. उसमें भी ये नहीं है कि आप उस person को visualize कर रहे हो. Magic wand we change someone else's life. तो उसमें भी आप अपने आप पे ही वर्क कर रहे हो, है ना? Because उसमें clearly लिखा हुआ है, put yourself in the picture and imagine that that person is telling you that अब मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मुझे बहुत बड़ी डील मिली, मेरे पास 10 लाख का वो आ गया, मैंने अपने 5 डेट्स क्लियर कर दिए, अभी 2 बचे हुए हैं, वो भी मैं करने वाला हूँ कल, ये हो गया, वो हो गया. उसमें भी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, मतलब दूसरों के लिए भी जब चीजें कर रहे हो तो उसमें भी that person is telling you why she has said this, because of some reasons, right? So हम जिंदगी भर अपने आप को नंबर 2, सेकेंडरी, टर्शियरी करके रखते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी बदलती ही नहीं है. ठीक है. तो ये सबकी ही जर्नी होती है. डेफिनेटली हम वैसे करेंगे आगे जाके that you have to fill up your own coffee in your mug so that you can serve others. Okay, so get busy in self growth, self development. That's very, very important. And thank you, Sunaina, for reading for us. Thank you so much. And Ritu, we'll be waiting for you to read tomorrow for sure. Yes, ma'am, please. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you. Bye bye. Thank you, Deepti ma'am. Thank you very much. Thank you, Deepti, so much. Bye. Beautiful sessions you take, Deepti. Thank you so much, Sarita. Thank Building you. beauty Thank you, life ma'am. by So holder. much. That's what I believe in always. Thank you. Thank you, ma'am.